So, good evening everyone. We are going to talk about archaeological anthropology. The present day field of archaeological anthropology, it have undergone transformations. Okay, earlier you can say the earliest phase was classical archaeology. In this phase of classical archaeology, the focus was mainly on the classification of antiquarian remains. So, basically in this phase, what was the main motto of anthropologist? Anthropological perspective was limited here. The purpose was to identify, dig and date and identify and classify whether the artifact or an antiquarian remain belongs to Paleolithic period, Mesolithic period, Neolithic period, Bronze Age, Iron Age, etc. So, in this phase you can say that three age system was there, okay, or you can say Lubbock gave the term like Paleolithic and Neolithic, है ना, Lubbock ने terms दी थी Paleolithic and Neolithic, है ना. So, in the earliest phase that was the purpose. Then what happened that around Second World War many changes have taken place, okay. As we have seen after the Second World War, even physical anthropology transformed into biological anthropology, right. Social and cultural anthropology merged into socio-cultural anthropology. Similarly, here also there was changes, right, and the change that was spearheaded, there were two main prominent scholars in two different countries. One was Lewis Binford and David Clark. These two scholars basically they were influenced by some scholars like Gordon Childe, Julian Stewart, systems approach, use of statistics, right, understanding the functionality of the artifact in the context of the overall environment and other things, right. So, basically this classical archaeology was transformed by a movement that we call new archaeology movement. Okay, and this archaeology movement was spearheaded by these two scholars. That lead to, you can say, second shift that becomes new archaeology, or you can say the proper name of new archaeology is processual archaeology. So, processual archaeology or new archaeology was basically, the main purpose was to make archaeology interdisciplinary, right. Here these scholars, whether it is Lewis Binford or Clark, they say any artifact does not occur in isolation, right. It is part of larger context where there is environment, right, there is geology, okay, and there are other factors that control that what kind of tool artifact can be found. So, if you have to study a tool or any artifact, any remain, you have to understand in the overall context. You have to study all processes associated with a particular tool, right. Who influenced these scholars? Julian Stewart's culture ecology approach. Who influenced them? Gordon Childe.
who was an archaeologist himself. Who other influenced? Pigott, ठीक है, ग्राहम क्लार्क, राइट, सिस्टम्स थ्योरी, ये सब लोगों ने इनको इन्फ्लुएंस किया. एंड दिस इज that we have to understand all processes associated with any particular artifact. Now here there is one limitation in this approach. Basically it neglects, you can say, human individuality, human innovativeness, right. So these people, they come under heavy criticism by interpretative archaeology. That can be told as the archaeology of mind also, right. It influenced other schools like cognitive archaeology, etc., etc. Now here human agency, human individuality, humans power to change or make artifacts was not understood. This stage basically appreciate human individuality, human agency to make tools to change or to shape the environment, to exploit the resources. ठीक है, यहाँ पे लेविस बिनफोर्ड और क्लार्क थे. इन लोगों का क्रिटिसिज्म देने वाले थे इयान होडर. इयान होडर was influenced from the post modern thought. थोड़ी सब्जेक्टिविटी को लेके आए. ये डिटर्मिनिस्टिक थे थोड़े से. ये कह रहे हैं नो, ह्यूमन इंडिविजुअलिटी, ह्यूमन एजेंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स दैट कैन शेप द एनवायरनमेंट. यहाँ पे एनवायरनमेंट शेप कर रहा था सब कुछ. ये कहता है कि ह्यूमंस कैन शेप द एनवायरनमेंट, राइट. सो ये इनका क्रिटिसिज्म था. इट इज़ ऑल्सो समहाउ इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल दोज स्कॉलर्स, ग्राहम क्लार्क, गॉर्डन चाइल्ड एंड ऑल. ठीक है. सो ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं आर्कियोलॉजी के एज अ डिसिप्लिन के डेवलपमेंट में. ठीक है, आई बिलीव यू हैव गॉट अ क्लैरिटी. सो डेवलपमेंट इस तरह से लिख सकते हो. आपसे न्यू आर्कियोलॉजी एक स्पेशल क्वेश्चन पूछा जा सकता है. दे कैन गो ऑन टू इंटरप्रिटेटिव आर्कियोलॉजी. सो इफ दे आस्क दिस वन, you can talk about this one. Whenever you can say they ask you about, you can say archaeological anthropology, you have to write all the 3. If they ask new archaeology movement, they ask you processual archaeology, then you have to write this from where it was influenced. और ये सब चीज़ें मैंने आपका जो 300 प्लस जो मेरे questions and answers हैं, model answers हैं, उसमें भी available है. So you can see it there also, right? Around 300 plus questions and answers are there. So in that it is available. Okay. Now after this we can take a topic of dating methods. Okay. So there are 2 types of dating methods. One is absolute or chronometric dating methods, which gives exact or approximate date of any artifact, antiquarian remain, okay, and relative dating method. Okay, relative dating method, it gives, you can say, relative age in respect to other artifacts, other remains. ठीक है, absolute नहीं दे सकता है ये. In this side we have, you can say, radiometric methods like carbon 14, है ना, potassium argon, you can say dendrochronology, we have thermoluminescence, last year in crash course I have covered thermoluminescence too, and it was there in the paper also, right. So in relative we have stratigraphy,
Okay, we have seriation. Do you know that on seriation, seriation means say any you can say artifact, any particular tool, it start emerging at one time, then it increase in frequency and then it goes down in frequency. That is what seriation is, right. So, seriation basically deals with the frequency of occurrence of any particular artifact. मतलब जैसे कि अगर बहुत सारी layers हैं 1 2 3 4 5 6, normally it is done with stratigraphy, ठीक है. So, basically in this phase say 1 or 2 hand axes are found, right. So, slowly it increase, यहाँ पे 6-7 मिल रहा है suppose, ठीक है, and in the third one it reaches up to say 15 axis, okay, and then slowly it goes down, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 और यहाँ पे मिल ही नहीं रहा. So, basically that is seriation, right. So, seriation tries to understand the, you can say increase and then decrease of, you can say number of items found in different layers. So, it is also tries to understand that it says that at this time it was at the peak, ठीक है. So, ये कब शुरू हुआ होगा, यहाँ से शुरू हुआ होगा, in this layer जो इसमें मिल रहा होगा that was the oldest one, okay, that was the youngest one, इस तरह से. So, it can be seen like this, ठीक है. First you can say शुरुआत, then increase and then decrease, ठीक है. ओके, सीरिएशन के ऊपर मैं जो बताना चाह रहा था दैट इज यू कैन से ऑल ऑफ यू नो, राइट, मोस्ट ऑफ यू नो दिस थिंग, बट एल्फ्रेड क्रोबर, माय पर्पस ऑफ bringing this discussion towards seriation is Alfred Kroeber. See, all of you know that Alfred Kroeber was an American anthropologist, student of French Boas, who is associated with the concept of culture area, right. So, let us try to connect things. Normally you have segregated knowledge. So, culture area का concept में इन्होंने काम किया था. He demarcated 6 culture areas in North America, that also you know, right, and he modified the concept of culture area given by Clark Whistler, his guru. क्लार्क विस्लर ने भी कल्चर एरिया का कॉन्सेप्ट दिया था. सो पहले क्लार्क विस्लर वाले कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा समझाता हूँ, तब मैं आता हूँ उस पर और हाउ इट इज़ कनेक्टेड टू सीरिएशन. सो क्लार्क विस्लर कहते हैं दैट देयर इज कल्चर एरिया, ओके, एंड इन कल्चर एरिया देयर इज कल्चर सेंटर. दिस इज कल्चर सेंटर, and in a sense he says that all cultural traits emerge in culture center, right, and then it radiate or you can say spread towards, this is also culture center, ठीक है, और यहाँ से ये spread होता है बाहर की तरफ, diffuse होता है basically, okay. This area in the neighboring area where the cultural traits from the neighboring culture center start emanating or appearing, that is marginal area, ठीक है. So, this is marginal area where the traits from nearby cultural centers start emerging, right. So, this concept of Clark Whistler was modified by Kroeber. Kroeber gave a concept of culture climax, and culture climax according to Kroeber was the dynamic equivalent of culture center. It is dynamic equivalent of culture center. Okay. Basically, he says that this culture climax is the area of above average development where the pattern, you can say the arrangement between the cultural traits
and complexes is more sharply visible. ठीक है, so it is the area of above average development where the pattern is more sharply visible. That is what Kroeber says about culture climax. Okay, he says that this climax, okay, culture climax, this concept he does not restrict it to the concept of culture area, rather he applied this concept of culture climax to the rise and fall of civilizations. The same concept उसने local level पे culture area पे भी apply किया, and he applied the same concept on the rise and fall of civilizations like Indus Valley civilization शुरू हुई, फिर peak पे पहुंची और फिर fall हुई, right? So same you can say that when it started, when it reached to the peak and then it falls. ठीक है, उन्होंने क्या बोला, कैसे rise and fall हुआ? He says that culture climax, I am representing it with CC. Okay, culture climax is the area of above average development. So in the beginning it will accept the ideas, technologies from the neighboring areas, right? It will become further great, so it reaches the peak. After some time it becomes further great, so after reaching heights of greatness it will stop accepting ideas and technology from the nearby, then it will start declining, right? So reach at the peak and decline. There he applied the concept or he refined the concept of seriation. ठीक है, क्योंकि शुरुआत होना और उसका बढ़ना और फिर गिरना, पीक पे पहुंचना फिर गिरना. ठीक है, नाउ कैसे अप्लाई किया? सी क्लार्क विस्लर बोलता है कि यू कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड कल्चर एरिया अनलेस द लिस्ट ऑफ ट्रेट्स, लिस्ट ऑफ कल्चरल ट्रेट्स रीचेज कंप्लीटनेस. जब तक पूरी लिस्ट तैयार ना हो जाए, दैट मीन्स यू हैव टू डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरी ट्रेट फाउंड इन ए कल्चर एरिया, राइट? सो बेसिकली अगर आप सबको डॉक्यूमेंट करोगे और वो कल्चर क्लाइमैक्स आप बनाने की कोशिश करोगे, देन यू कैन अंडरस्टैंड द राइज एंड फॉल, कब फ्रीक्वेंसी बढ़ी कब घटी. ठीक है, सो दिस वे ही यूज्ड. नाउ लेट अस कम बैक टू आवर स्ट्रैटिग्राफी, सीरिएशन, यू कैन से फ्लोरीन डेटिंग, नाइट्रोजन डेटिंग, पैलिनोलॉजी, पैटिनेशन. ठीक है, सो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ दैट कैन बी हेल्पफुल. फर्स्ट थिंग, जब भी कोई डेटिंग मेथड पे क्वेश्चन आएगा तो क्या क्या लिखना है. ओके, सो सिंपल चीज़ें एक है, यू विल हैव टू डिफाइन इट, give the definition of these methods. ठीक है, after defining you have to write what is the basic principle behind it. Okay, say for example if you want to talk about stratigraphy, so stratigraphy is based on law of superposition and law of association, right? That means superposition means that the lowest layer is older than the topmost layer, that is the simple principle. ठीक है, association means if two artifacts are found in the same layer that can be considered of the similar age. ठीक है, अगर यहाँ पे हैंड एक्स भी मिल रहा है, यहाँ पे चॉपर भी मिल रहा है, तो they will be considered as they belong to same age. Is it clear? So principle behind. If you talk about carbon 14, so that principle that radioactive carbon is available in the atmosphere, that is produced because of the cosmic radiations, है ना? cosmic radiations न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करती हैं, वो कार्बन एटम से और नाइट्रोजन एटम से टकराता है, then they remove one proton and it becomes carbon 14. Carbon 14 combines with oxygen to make radioactive carbon dioxide, which is consumed by the plants, and that plants that take up radioactive carbon in their body, which is eaten up by animals, right? Then it enters animals body. Okay, when they die they stop taking radioactive carbon, right? Because on a daily basis plants take, and on the daily basis animals also intake radioactive carbon, but after death they stop taking it,
right? And we know that radioactive carbon, it disintegrates, it decays at a constant rate at the half life of 5730 years, right? So if we know that, then we can calculate. That is the principle behind it. After that, you can talk about what can be the materials which can be dated. Materials dated, कौन कौन से material इनसे date कर सकते हो? Say for example, if you talk about carbon 14, so it can date organic remains, right? If you talk about stratigraphy, so it can date organic as well as inorganic remains, है ना? If you talk about carbon, this potassium argon, so it can date inorganic. It can potassium argon जो है volcanic rocks, ठीक है, उसको date कर सकता है. Then after that you have to talk about merits and demerits. And finally you have to talk about if there is any case study. Say अगर आपको stratigraphy की बात करें, so you have stratigraphy of Swan Valley. सभी की बुक्स में Swan Valley की stratigraphy तो पढ़ते हैं ना, so stratigraphy की आप वो डाल सकते हो. You can talk about भीमबेटका, उसकी भी stratigraphy आपने पढ़ी होगी, right? So जो आपने stratigraphy पढ़ी है उसका केस डाल दो, ठीक है. कार्बन 14 का कुछ है, so उसका naturally scholar का नाम दोगे. So almost all the specimens they have been dated using carbon 14 ज़्यादातर जगह पे, ठीक है. So if you have some concrete, so that will become a case study kind of thing, ठीक है. Finally in the concluding remark, आप relative dating को don't portray it at a weaker level. You say that even if you want to date any artifact, right? So relative and absolute dating are used in combination. पहले निकालने के लिए stratigraphy कर रहे हो ना, तब बाहर निकालने के लिए डेट कर लोगे, but first you are doing stratigraphy. So ऐसा नहीं है that they are absolutely waste. Okay, so don't show them like this, that no, most of the students they do that it is we can say not a good method. That way is not that good, ठीक है. हाँ, then एक मेथड बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन था कि थर्मल ल्यूमिनेसेंस में होता क्या है एक्चुअली, राइट. सो उसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. Many of you have asked, so that is why I am telling you. Thermoluminescence. Thermoluminescence में होता क्या है? Luminescence means light radiation, light emit करता है. Okay. So in this method basically it can be applied mainly on the crystalline objects, ठीक है. Crystalline objects. Crystalline objects have defects. Crystalline defects. Crystalline objects कौन से होते हैं? Pottery, clay made objects, ठीक है, अर्थ के अंदर, या फिर कुछ स्टोन टूल्स भी क्रिस्टलाइंस जिनका स्ट्रक्चर होता है वो हो सकते हैं, ठीक है. सो क्रिस्टलाइन ऑब्जेक्ट्स बेसिकली whenever they take some energy, right, that can be cosmic energy, cosmic और अर्थ की रेडिएशन हीट या फिर सोलर रेडिएशंस. सो इन दोज ऑब्जेक्ट्स some of their electrons they get excited and they enter or they get trapped into these defects और बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है. बाहर कब निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली उसमें ट्रैप होते रहेंगे. हाउ दे कैन कम आउट ऑफ इट? once they are provided with sufficient heat, and whenever they are provided with sufficient heat they will emit it in the form of radiation, or you can in the form of light, fluorescent light, मतलब visible light, या फिर उसके फॉर्म में वो बाहर निकलेगा,
ठीक है। सो सपोज लास्ट टाइम वो कब गर्म किया गया था, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? रेडिएशन डोज के थ्रू। बिकॉज सपोज यू हैव हीटेड वन ऑब्जेक्ट टुडे एंड देन यू लेफ्ट इट इन ओपन, ठीक है, आज आपने किसी को गर्म कर दिया एंड देन यू लेफ्ट इट। सो व्हाट विल हैपन, over a period of say 10 years it will keep on absorbing cosmic radiation or solar radiation or you can say earth's heat, right? And we know that the radiation dose is coming at a constant rate. We know that radiation dose absorbed, so whatever light is emitted by that object on heating it, we can calculate the radiation dose, right? And on the basis of that we can calculate the age of that artifact. Is it clear? So basically जब आपको calculate करना है तब आपको दोबारा heat करना है, and once you heat it then it will become empty almost. All the trapped electrons will come out in the form of light energy. ठीक है? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे ये जलियांवाला बाग के पास में एक वेल में 1857 से पहले के वो मिले, 1857 के अराउंड। बिल्कुल कर सकते हो। जिनको पहले समझा जाता था कि वो पंजाब के लोग थे, पर डेटिंग मेथड से पता लगा कि वो बंगाली रेजिमेंट के सोल्जर्स थे। बिल्कुल कर सकते हैं। आपको लगता है कि अगर आपने न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ा है और वो डेटिंग कॉर्बन डेटिंग उन पे यूज हुआ है, बिल्कुल आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। थर्मोल्यूमिनेसेंस, आई बिलीव यू कैन अंडरस्टैंड इट। ठीक है, कि बेसिकली क्या होगा, रेडिएशन डोज वी कैन कैलकुलेट, बिकॉज रेडिएशन you can say whether it is cosmic radiation, solar radiation, it has a almost constant rate. I cannot say that it is absolutely constant because variations may occur in cosmic radiation, solar radiation, है ना, वो तो आपको solar flares और solar cycle का पता है, but still we know about that too, कि sun spot cycle 22 years में change हो जाती है, so we know about the radiation, you can say the atmospheric radiations, ठीक है, and we can calculate and measure according to the radiation dose absorbed by any artifact. ठीक है, how we will know? One, we will heat it. When we will heat it, then it will radiate energy in the form of visible radiation. तो वो किस हीट पे emit हो रहा है, उससे compare करके amount of heat, visible light emitted will be you can say measured in proportion. That will be in proportion to absorbed heat. ठीक है, हाँ, ठीक है, कितना लाइट एमिट होगा, दैट विल बी प्रोपोर्शनेट, सो यू कैन डू दैट। ठीक है, थर्मोल्यूमिनेसेंस, सो मेनली पोट्री वगैरह आप उसमें चेक कर सकते हो। ओके, नाउ टूल टेक्निक्स, टूल टेक्निक्स सिंपल है, परकशन, ओके, प्रेशर, ओके, then grinding, picking and polishing, पैकिंग, ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग उल्टा कर लेना, है ना, पैक पहले करते हैं फिर ग्राइंड करते हैं एंड देन पॉलिश करते हैं। परकशन कैन बी इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट,
ओके, परकशन मीन्स तोड़ के, ठीक है। सो इनडायरेक्ट टेक्निक, इनडायरेक्ट परकशन कैन बी ब्लॉक ऑन ब्लॉक और एनविल ऑन एनविल। इसमें कंट्रोल बहुत कम होता है बिकॉज यू आर जस्ट टेकिंग वन एनविल, वन ब्लॉक एंड हिटिंग ऑन अनदर ब्लॉक, तो कुछ नहीं पता कहाँ पे लगेगा, ठीक है। सो ब्लॉक ऑन ब्लॉक बहुत यू कैन से अनकंट्रोल्ड काइंड ऑफ टेक्निक है। इसमें चॉपर चॉपिंग वगैरह हम बना सकते हैं, ठीक है। चॉपर चॉपिंग टूल्स वी कैन मेक यूजिंग block and block technique. Second will be yours stone hammer technique. ठीक है, in stone hammer technique you will pick one stone in your hand, right, and you will manipulate another stone using that, ठीक है, दूसरे हाथ में लेके उसको stone hammer technique that will be, ठीक है। यहाँ पे हम उसको पटक के नहीं मार रहे हैं, इसमें से हम एक स्टोन को हैमर की तरह यूज कर रहे हैं एंड देन वी आर ट्राइंग टू शेप अनदर स्टोन, अनदर पीस ऑफ रॉक, दैट इज स्टोन हैमर टेक्निक। सो इट कैन बी यूजफुल फॉर द सेम चॉपिंग टूल, कि चॉपर से एक बीच में टुकड़ा कर दिया आपने, दूसरी साइड से आपने शेप किया तो आपने स्टोन हैमर यूज किया, थोड़ा सा कंट्रोल आया, ठीक है। इसमें बिल्कुल कंट्रोल नहीं था, थोड़ा सा कंट्रोल आया। थर्ड विल बी सिलेंडर हैमर टेक्निक। देखो इसके अलग अलग तरीके से हम ये टेक्निक्स को देख सकते हैं। देयर कैन बी वेरियस वेज, दैट इज यू कैन से आई हैव अलग अलग टाइम पे मैं अलग अलग भी बताता रहता हूँ, बहुत बार बताया होगा अलग अलग भी। सो दिस कैन बी द अनदर वे ऑफ लुकिंग। पहले मैं शायद एक तरीके से बात कर चुका था, तो हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, ठीक है। सिलेंडर हैमर टेक्निक में क्या है, दैट अ सिलेंड्रिकल हैमर इज यूज्ड टू मैनिपुलेट। इसमें थोड़ा सा कंट्रोल और ज़्यादा है। इससे हम क्या बनाते हैं, हैंड एक्स वगैरह, ठीक है, हैंड एक्स वगैरह यूज बनाते हैं इससे, राइट, हैंड एक्स बना सकते हैं। लेवलुएशन टेक्निक में भी सिलेंडर हैमर यूज करते हैं, ठीक है। लेवलुएशन टेक्निक ऑल्सो यूजेस सिलेंडर हैमर टेक्निक, ठीक है, जिसमें कि हम स्क्रैपर्स, बोरर्स एटसेट्रा दैट वी मेक। सो initially they use stone hammer and then the combination of stone hammer and cylinder hammer. So cylinder hammer is a little bit more controlled. Then we have, sorry मैंने उल्टा लिख दिया, हाँ ये उल्टा लिख दिया, डायरेक्ट नहीं था, ये डायरेक्ट था। ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मतलब पंच यूज करना। सो डायरेक्ट मतलब इसमें डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तभी तो कंट्रोल नहीं आ रहा ना, प्लीज रेक्टिफाई दैट, वो इनिशियली गलती हो गया। डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट, ठीक है। सो इनडायरेक्ट इज काइंड ऑफ पंच टेक्निक, ओके, इन हिंदी वी कॉल छैनी, ठीक है, छैनी रख के ऊपर से मारना, सो इट गिव्स यू मोर कंट्रोल, ठीक है। सो से दिस इज अ स्टोन टूल, यहाँ बनेगा नहीं, say this is a stone, right, it is like this. So you put a punch here and then you will hit it with a cylinder hammer or a stone hammer. So if you hit it like this, it will give you something like this, right. So blade technique, blade making technique, ये आपका ऐसा आ जाएगा निकल के, ठीक है। So blade technique, knife technique, in that we use indirect technique. It is very controlled. It is more controlled than these. ठीक है? So it is more controlled. Blade technique, blade, knives. Then we have pressure technique. Pressure means we take a wooden horn or something, we just put pressure against a stone to remove micro flakes, small flakes, ठीक है। So here we make microliths using pressure technique. मीजोलिथिक में जो टेक्निक यूज हो रहा था वो प्रेशर टेक्निक यूज हो रहा था टू मेक माइक्रोलिथ्स। जो जियोमेट्रिक टूल्स वगैरह थे वो प्रेशर टेक्निक से थे, ठीक है। ये इससे भी ज़्यादा कंट्रोल्ड है, ठीक है। इट इज़ मोर कंट्रोल्ड देन इवन दिस, बिकॉज यहाँ पे तो आपको, ठीक है, आप इनडायरेक्ट कर रहे थे,
इसमें तो आप और भी कंट्रोल प्रिसीजन कर सकते हो कहाँ से निकालना है आपको, राइट. Grinding, polishing and packing, grinding and polishing, it is used in Neolithic time. So it is, you can say, used in making highly polished tools, ठीक है, like celts, hand axes, ring stones, quoins, जो हम Neolithic में मिलता है. Now let us see the examples made using. So block on block and stone hammer के combination से we can make chopper chopping tools. So combination of this can be useful to make chopper chopping tool. It can be useful sometime to make crude hand axes also. ठीक है, ये दोनों technique they can be useful to make crude hand axes also. Right, cylinder hammer can be useful to make Acheulean hand axes. Acheulean hand axes, ठीक है. So basically अगर मैं देखूं lower Paleolithic period, right, which is old Stone Age. Normally you see that the time period is approximately 2.5 million to lower Paleolithic is 1 lakh, ठीक है ना. So around 2.5 से 1 lakh है ना. But this date is not fixed and this date is also not fixed, ठीक है. I have told you that in Dikika tool as old as 3.3 million years old is also found, ठीक है. So site specific है, ऐसा नहीं है, but some scholars take it as 2.8, some scholars take it as even 3.3, some scholars take 3. So आप कोई भी लिखोगे it's or you know nothing, it doesn't matter, ठीक है. आप अगर बोलोगे Dikika in Ethiopia there are some stone tools that are as old as 3.3, we can trace it back to that. 2.5 भी चलेगा, 2.8 भी चलेगा. Some scholars do write this line also, they take it to 2 lakh. Some put Levalloisian under lower Paleolithic. तो हम Levalloisian को शुरुआत lower Paleolithic में करेंगे, ठीक है. So हम इसलिए 1 लाख लिख रहे हैं यहाँ पे. Okay. So 2.5 to 1 lakh, it is good, well and good. You can go 2.8 to 1, वो भी जा सकते हो. It's perfectly all right. There is nothing wrong in writing because different sites show different time period also, ठीक है. So in lower Paleolithic period, what kind of tools we have? We have chopper chopping tool. We have Abavilian or Chilean tool, we have Acheulean tools, and we have Clactonian tool, and we have Levalloisian tools also, ठीक है. तो हम lower Paleolithic period की अगर बात करें, so in lower Paleolithic we have Oldowan tools, we have Abavilian, we have Acheulean tools, we have Clactonian tools, and Levalloisian tools, ठीक है. See, these three are core based tools. These two are flake based tools, ठीक है. core based tool, flake based tool. So core based tool, that means core is used as the tool. Oldowan tool draws from Olduvai gorge.
okay, Olduvai and main tool type is chopper and chopping. ठीक है, चॉपर एंड चॉपिंग टूल, यू कैन से दिस इज चॉपर, अगर दोनों साइड में वो आ जाएगा तो चॉपिंग. ठीक है, अबेविलियन, दीज आर यू कैन से द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम, इसका एग्जांपल इंडिया में मतलब यूनाइटेड इंडिया में सॉन. ठीक है, अबेविलियन, अबेविलियन बेसिकली क्या है, सेंट अबेविल फ्रांस में से एक साइट है, ओके, उसी के नाम पे अबेविलियन. सो दीज आर क्रूड हैंड एक्सिस, लार्ज साइज्ड हैंड एक्सिस. ठीक है, क्रूड एंड लार्ज साइज्ड हैंड एक्सिस. ओके, एशुलियन आर लिटिल रिफाइंड हैंड एक्सिस मेड ऑफ फ्लिंट. ठीक है, काफ़ी रिफाइंड हैंड एक्सिस थी, that is Acheulean. Now Acheulean hand axis cleavers, they are found in the Madrasian culture in India, they are found in Bhimbetka in India, right? Okay, so Acheulean culture. Clactonian is derived from Clacton on Sea, that is found in Britain, UK. Levalloisian is derived from Levallois Perret, a site from France. Levallois Perret, a site from France, and here we have Levalloisian technique. ठीक है, in which first we prepare a core and then we remove flakes from that core. ठीक है, first we prepare a core completely, we remove all the weaknesses from that core. सब कुछ रिमूव कर लिया, and then you will hit it from here to remove a particular flake, right? So this, when you take it out, it is like this, right? And you will touch it up also using stone hammer technique, this cylinder hammer, and then it will become very sharp edged. This can be used for scraping the bark, removing flesh from the bones, scraper. Sometime it come out as a point, sharp point. ठीक है, it can be used in the spears etc. Okay, that is Levalloisian. Levalloisian technique was further taken up in the Middle Paleolithic. Okay, that becomes Levalloisian Mousterian technique, right? Mousterian technique is derived from the name of the place La Moustière in France. ठीक है, अब इसमें देखो Oldowan tools, probably these were made by Australopithecus, but definitely by Homo habilis. Probably by Australopithecus and definitely by Homo habilis. If we talk about Abelian, Acheulean, they are, or all these four, ठीक है, these two definitely by Erectus. This is also by Erectus. Levalloisian, Mousterian, because Mousterian is associated with Neanderthal, right? So Levalloisian, Mousterian basically was by Neanderthals. ठीक है, क्योंकि it is in the fag end. You know that Neanderthals around, they are around 2 to 3 lakh years old. 2 लाख तो है ही हैं, 2 लाख साल पुराने. So ये इतनी पुरानी है Levalloisian technique, जो Levalloisian जो method है. So Levalloisian belongs to Neanderthals. जब भी किसी भी टूल के बारे में या किसी पीरियड के बारे में, so in lower Paleolithic who was the which species was there? So you can say Australopithecine, Homo habilis as well as Erectus. ये तीन तो definitely थी इसमें, right? Even the Narmada men, so नर्मदा में जो टूल ट्रेडिशन है that is also Erectus से एसोसिएट करते हैं. ठीक है, ओके. एंड यू नो दैट आफ्टर 1 लाख ईयर्स तो हमारे पास नियंडरथल था, राइट? अपर पैलेलिथिक दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 40,000 ईयर्स अगो, इन दैट टाइम पीरियड वी हैव मॉडर्न ह्यूमन. ठीक है, सो लोअर पैलेलिथिक इज डन. इन मिडल पैलेलिथिक, हाँ, in middle Paleolithic you have
the use of cylinder hammer technique only you make the Mousterian tools, ठीक है, flake based tools. In upper Paleolithic, that is Aurignacian culture, Solitarian culture, Gravitanian culture, right, the Megalomoisian culture, ठीक है. So ये सारे आपके कौन सा था ये, indirect tool technique, that is punch technique, in which blade, tool, knives, etc. were there, right. Then Aegean culture, then Magdalenian culture, okay. This is middle Paleolithic culture of Europe, right. This is इवन, हाँ, इसमें आप नेटुफियन कल्चर भी आपका यही वाला है, ठीक है. नेटुफियन कल्चर जो क्वेश्चन आया था वो भी आपका मिडल मेसोलिथिक कल्चर ही था, वो भी आपका, ठीक है, अराउंड 12 to 15,000 ईयर्स अगो. और ये तो आपका नियोलिथिक कल्चर्स, ठीक है. नियोलिथिक कल्चर इज एसोसिएटेड विद द सेटलमेंट, ठीक है. यू कैन से एग्रीकल्चर एंड सेटल्ड लिविंग. So I believe you can do it, these techniques, ठीक है. पंच टेक्निक, ब्लेड टेक्निक, ओके. इंडिया की साइट्स के नाम आप देख ही लोगे. ओके. One question that I do not really found anyone is writing satisfactorily, outline the lower Paleolithic culture using the tool techniques. ये question I think it is a previous year question and not many of you write it satisfactorily. Okay, so अगर आपसे outline करने को बोला है, that means that you have to show the geographical distribution. So मैंने जो आपको बताया है वो outline करके बताया है. In lower Paleolithic we have Oldowan, we have Abelian, we have Acheulean, we have Clactonian, we have Levalloisian. You know the name of the sites, just name them and just outline on the map, world map or India map. ठीक है. So outline करने का मतलब आपको map बना के भी बताना है. You just concentrate more and more on tool technology. So tool technology should be associated with that. ठीक है. साइट के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जब आउटलाइन करके बोला है तो. So what I was talking about, साइट के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आप किसी भी साइट पे या किसी भी उस पे आएगा से आपको लोअर पैलेलिथिक कल्चर को लिखना है. So you will talk about that it is, you can say, earliest phase of old stone age, है ना. Of old stone age, ठीक है. So its time period, so say 2.5 million to 1 lakh, है ना. What kind of climate was there? So Pleistocene climate, है ना. Then after that, in this lower Paleolithic, we will talk about geographical distribution. ये आउटलाइन ही हो रहा है इस क्वेश्चन में भी जो मैं बता रहा हूँ, ये आउटलाइन ही हो रहा है. When you talk about geographical distribution, you just name some sites, right, what all this there, ठीक है. So Oldowan is found in Eastern Africa, Rift Valley,
Swan Valley. When you talk about Abelian, so France में. When you talk about Acheulean, then Madras culture or European culture, right? Even Bhimbetka, right? All these places that you can write Acheulean. Then you can talk about Clactonian, large sized flakes, they are found in one site in UK, right? Clacton on sea. Then Lavaloisian, ठीक है, जहाँ जहाँ पे फ्लेक टूल्स मिले वो लावालोइशन टेक्निक ज़्यादा अर्लीस्ट थे वो, ठीक है. सो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें बताना है आपको सिर्फ. देन यू विल राइट अबाउट द फीचर्स. हाँ, बिफोर फीचर्स स्पीसीज, होमो स्पीसीज या फिर कौन सी स्पीसी थी. सो यू कैन से पॉसिबली ऑस्ट्रेलोपिथेकस. जब आप ऑस्ट्रेलोपिथेकस लिखोगे सो पॉसिबली या प्रोबेबली होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस एंड इरेक्टस, ठीक है, ये तीनों इसमें था, ठीक है. देन यू विल राइट अबाउट इट्स फीचर्स. सो एक तरह से लॉन्गेस्ट फेज था, 3 स्पीसीज में आ गई थी, ठीक है. इन फीचर्स यू विल टॉक अबाउट द टूल टाइप, tool technique, okay, and material used, ठीक है. Then you will talk about the kind of subsistence, okay, किस क्या खाते थे क्या नहीं खाते थे, एनिमल डाइट थी, कोई फॉसिल रिमेन मिला है कि नहीं मिला. Then you have to talk about the you can say their social organization. If you know a little bit about it, you know about their housing pattern something, okay. If you know about the belief pattern of them, that you have burial practices etc., you have to mention all of them, ठीक है. Finally you will say that lower Paleolithic transitioned into middle Paleolithic, ऐसे करके आप उसको एंड कर दोगे, ठीक है. सो एक तरीके से लिख देना. बेसिकली स्पीसीज वाला पॉइंट मोस्ट ऑफ द नोट्स जो आप पढ़ते हो उसमें मिसिंग रहता है, बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट बता दी गई है, ठीक है. तो स्पीसीज भी ज़रूर बताना है. दैट शोज़ कि कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है. अगर मैं इस स्पीसीज को पीछे वालों पे अप्लाई करके दिखाऊं आपको, सो हियर दीज 2 मेथड्स, स्टोन हैमर्स और ब्लॉक ऑन ब्लॉक, मेनली वी कैन एसोसिएट विद हैंडीमैन, होमो हैबिलिस, ठीक है. सिलेंडर हैमर कैन बी एट्रीब्यूटेड टू दिस इरेक्टस, ठीक है. ये वाला, हाँ, ये इरेक्टस भी और निएंडरथल भी, सिलेंडर हैमर. पंच टेक्निक कैन बी एट्रीब्यूटेड टू मॉडर्न मैन, मॉडर्न ह्यूमंस, ठीक है. नेचुरली ये भी मॉडर्न ह्यूमन, ये भी मॉडर्न ह्यूमन, ठीक है. ओके, इंडिविजुअल साइट्स प्रिपेयर कर लेना. राखी घड़ी, यू कैन प्रिपेयर इट दिस टाइम, इट इज़ एक्सपेक्टेड, ठीक है. राखी घड़ी ज़रूर प्रिपेयर कर लेना. Important archaeologists also you can prepare, SD Sankhalia, VN Mishra, TC Sharma, ठीक है, that you can prepare. Okay. Yes, what I was saying is that you should include the knowledge of paleontology, paleoanthropology with archaeology, right? Because if you want to construct the human evolution, reconstruct the human evolution, then you have to understand or you have to take into consideration both factors. One, that is paleoanthropological factors, and you can say this archaeological specimens,
ठीक है, as well as we take geology into consideration. So if you know about archaeology, अगर मेरे lectures में जिन्होंने attend किया था, so I tell in the very first word that I say is that the archaeological anthropology is interdisciplinary. It includes the knowledge of paleoanthropology, paleontology, क्योंकि आप और भी fossils पढ़ते हो, and it includes the study of geology. Environmental changes also led to changes in what kind of food is available, right? What kind of tool you can make, that also depend, because if you just understand that when we transitioned from Paleolithic to Mesolithic, right? So Paleolithic culture, this was during the Pleistocene epoch, right? We transitioned from Paleolithic to Mesolithic. So the nature of game, availability of game transitioned from large animals to small animals, है ना? Pleistocene में mammoths और large animals थे. यहाँ पे you can say because glaciers have receded, that give rise to small water bodies, है ना? बहुत सारी water bodies हो गई और forest आ गए. So small game and fishes. कौन सा पीरियड था ये? होलोसीन पीरियड, ठीक है, वार्म पीरियड था. सो स्मॉल गेम वाज अवेलेबल एंड फिशेस वर मोर अवेलेबल. सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग दिस टाइम? द नेचर ऑफ टूल्स, हियर वी हैव लार्ज साइज्ड टूल्स and here we have small sized tools, microliths, है ना? So tools कैसे बदल रहा है, ठीक है. एक और भी चीज है यहाँ पे, एक तो ये तो एनवायरमेंटल फैक्टर को कंसीडरेशन करता हुआ हो गया, राइट? अगर हम पैलेलिथिक पीरियड की बात करें, सो इनिशियली वी हैव होमो हैबिलिस, सो क्रेनियल कैपेसिटी was not that much. The moment cranial capacity increased and the changes in the hand anatomy, posture have taken place, that led to many changes, ठीक है. Because if you say that, if you have attended my earlier crash course के lectures में हमने बात किया कि जो early species थे उनकी fingers curved थी, right? Because they are partly arboreal, राइट. सो कर्व फिंगर इतना प्रिसीजन नहीं देगा जितना कि एक इरेक्ट पोस्चर वाले मैन का देगा, राइट. सो प्रिसीजन ऑल्सो वेरीज, ठीक है. हैंड स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आए थे. सो दैट ऑल्सो लेड टू चेंजेस इन द काइंड ऑफ टूल्स दैट यू फाइंड. सो यहाँ पे आप कौन सी नॉलेज यूज कर रहे हो? यू आर यूजिंग द नॉलेज ऑफ पैलियो एंथ्रोपोलॉजी, comparative anatomy, and then you are trying to reconstruct what kind of tools have been made. So you use the knowledge of experimental archaeology also, ठीक है. आप वो टूल टेक्निक को फील्ड में भी इमिटेट करने की कोशिश करते हो, ठीक है. और नियोलिथिक में तो आपको पता ही है दैट एनवायरमेंटल प्रेशर लेड टू द चेंज, शिफ्ट टुवर्ड्स, देयर आर मेनी थ्योरीज, राइट. वन वाज क्लाइमेट चेंज थ्योरी, अनदर वाज पॉपुलेशन प्रेशर थ्योरी, है ना. 2-3 थ्योरीज हैं. आई हैव डिस्कस दैट इन डिटेल. व्हाट लेड टू द ट्रांजिशन टुवर्ड्स हंटिंग गैदरिंग टाइप ऑफ लाइफस्टाइल, बिकॉज यहाँ पे हंटिंग गैदरिंग था, है ना. यहाँ पे भी गैदरिंग था बट स्टार्ट हो गया था पार्टली, ठीक है. सो देयर आर मेनी थ्योरीज. अगर हम बात करें, चलो थ्योरीज को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं. थ्योरीज ऑफ फूड प्रोडक्शन, ठीक है. सो वी कैन डिवाइड थ्योरीज ऑफ फूड प्रोडक्शन. One was child's model, child's theory, Gordon Child, ये वही child है, Gordon Child. Second was Binford Flannery model.
third was Mark Cohen, and last was 3-4 scholars थे, मैककोरिस्टन, हॉल, है ना, एक और था. सो दीज आर द सम स्कॉलर्स. चाइल्ड क्या कहते हैं? चाइल्ड सेज दैट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हुआ? ड्राइनेस हो गया. ओके, एंड पॉपुलेशन shrink to few pockets of abundance surrounded by deserts. So that is OSS model. क्या कहना चाहते हैं OSS model में? Let us try to understand. What was the first theory? OSS theory of Gordon Childe. Gordon Childe says the climate change during the Holocene period, okay, मतलब प्लेस्टोसीन से जो चेंज हुआ, climate change results into, you can say, dryness, right? Dryness in the climate, right? Reduced rainfall that led to reduced rainfall, especially near east. ठीक है, that led to shrinking of people in few pockets, or you can say oases of abundance surrounded by deserts. Right? So climate change led to shrinking of people into few pockets, or you can say oases, and that led to, that pressure led to, you can say, finding new ways of surviving, adaptation that lead to shift towards food production. ठीक है, नेक्स्ट इज, हाँ, इसकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया रॉबर्ट ब्रेडवुड ने. Braidwood says that the kind of dramatic description of climate change given by Gordon Childe was not that dramatic. And second, Braidwood says that if change had taken place in the climate, it might have taken place in the past as well. Why it did not, earlier men did not shift to cultivation? Why only just 10,000 years ago? Is it a valid criticism? Because climatic change had taken place in the past also. Warming and cooling phases, ice age and warming have taken place in past also. Why men did not shift to cultivation earlier? Why only just 10,000 years ago? Huh? Yes. So basically in the past, अगर इसका हम क्रिटिसाइज करें ब्रेडवुड को, पहले इतनी क्रेनियल कैपेसिटी भी नहीं थी, इतना सोच पाने की, रीजनिंग की भी, तो ये क्रिटिसाइज हो सकते हैं. ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की थ्योरी को बाद में मैककोरिस्टन, हॉल ने एक्सेप्ट किया. ठीक है, सेकेंड थ्योरी इज द थ्योरी गिवन बाय Binford and Flannery.
Binford and Flannery says that there are other factors. They say that there are some optimum areas. Okay. In the optimum areas, population increase took place. Population increase took place. So, in the optimum areas, the area cannot, you can say, feed all the population, right? So, they migrated, okay, to other areas with, you can say, less abundance, where optimum availability of food was not there, okay, migrated to, you can say, marginal areas. And they started producing what they have seen available in nature. So, it is because of the increase in population according to these, right. They tried to apply this on Middle East and it was suitably applied to there, right, because in those areas population increase took place earlier, then shift towards food production, वहाँ पे apply हो रहा है. Archaeological evidence of Middle East suggests so, ठीक है. Except southwestern Iran, ठीक है, southwestern Iran में ऐसा नहीं मिला. So it is also, you can say, criticized for that matter. इसी का एक वेरिएंट है जो मार्क कोहन की थ्योरी है. मार्क कोहन की थ्योरी कहता है कि दैट नॉट इन few areas but population increase was at the global scale, so people have nowhere to go, right. इसने बोला ऑप्टिमम एरियाज में पॉपुलेशन बढ़ा. मार्क कोहन इसी की थ्योरी को वो एडवांस करते हैं. ही सेज दैट पॉपुलेशन इंक्रीज वाट नॉट जस्ट इन द ऑप्टिमल एरियाज एज सजेस्टेड बाय बिनफोर्ड एंड फ्लैनरी, रादर इट टुक प्लेस एट द ग्लोबल स्केल. So people have nowhere to go, they have to produce at the place where they are living. So they shifted towards food production. They have tried many strategies and finally may have shifted to production of the food. That was the theory of Mark Cohen also. ठीक है, similar ही था. तो population pressure को Binford, Flannery as well as Mark Cohen have given due weightage. Then this theory fell out of favor because in many places the population increase did not precede the shift towards agriculture, right. So then again it fall back to climate change, where McCorriston and Cole says that climate change was the main reason that led to shift, and they produced the evidences also, right. They produced the evidences like in the summer time when the rainfall is less. So hunter gatherers basically they have to rely on other produce, because in the summer season the wild animals cannot have sufficient grass to eat, so they become so lean, और अगर वो lean हो जाएंगे तो they cannot produce sufficient flesh for eating. So ये कहते हैं कि climate change was naturally might have led to shortage of some nutrients among the hunter gatherer population, and that might have led to shift towards food production. So ये चार आपके पास theories है. What are the consequences of food production? Because that can be a possible question. So consequences you can see of food production on all lines: social, economic, political as well as health, right. In social area, what you can say that what are the consequences? Social stratification is the result of food production, because some have more access to food, some have less access to the food. So that led to you can say social stratification, right. आपको पता होगा ना, जब you can say food production, it led to sedentary living. Because of sedentary living, increase in population, ठीक है. Because of this, there is increase in food production surplus. Increased food production, you can say relieved few people from agriculture, they start trying other things. So specialization,
okay, and because of specialization what happens, stratification है ना, कुछ के पास ज़्यादा कुछ के पास कम, तो stratification इसी का रिजल्ट है. If you have surplus, increased food production, you need pottery, so technological changes, pottery to store. If you have surplus food production, you need to exchange, right? ये specialist हैं, ये तो produce नहीं कर रहे हैं, so trade. Okay, if trade करोगे तो हिसाब रखना पड़ेगा, script. ठीक है, ओके, अगर आपके पास सरप्लस है, राइट, कुछ के पास ज़्यादा है कुछ के पास कम है, स्ट्रेटिफिकेशन है, देयर विल बी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, सो यू नीड सम काइंड ऑफ नॉर्म्स, सम काइंड ऑफ लॉज, नॉर्म्स इन द सोसाइटी that regulate internal order. If your society have more surplus than the society in the neighborhood, so what will happen? There will be envy of you. So what is to be done? You need to have a kind of army to protect yourself. So you need political organization, right? So political organization is also product of this. ठीक है? Then basically see, food production से क्या हुआ, पहले paleo time में diet was more diverse. It include meat, it include food from vegetables, fruits, roots, nuts. But अभी क्या हुआ, agriculture की वजह से एक restricted diet हो गई. So there are more mineral deficiencies in the humans that has been proved through archaeological evidences and as well as paleoanthropological evidences, which suggest reduced bone density, which suggest decline in stature, and which also suggests that you can say demineralization in the enamel too. ठीक है, so वो suggest करता है कि health में भी decline आया था. तो food production का ही एक consequence है the decline in stature and health. ठीक है, since these changes are very fast, took place in last 10,000 years, maybe more precisely 5 to 7,000 years ago, right? That is why Gordon Childe call Neolithic period as a revolution, not evolution. ठीक है, why revolution? Revolution is a sudden process of change and evolution is a gradual process of change, right? Revolution is sudden and evolution is a gradual process of change. We can counter Gordon Childe on this, because when he says that this is sudden change in last 5 to 7,000 years ago, no. Natufian culture, or you can say in Mesolithic culture, we have domestication of wild animals. We have started you can say cultivating wild grains. So it is not sudden change. Some kind of sedentarism was already available in Mesolithic period. It is not sudden change. It was a gradual change. Is it clear? So you can counter it using Natufian culture is a, you can say, example of Epipaleolithic period, Mesolithic period you can say, right? That had shown this. ठीक है. हाँ, so okay, now we will end this session today here itself. ठीक है, we'll meet again, and thank you. If you want any topic to be taken, right, if you are interested in any topic, you have difficulty in understanding, you can text back to us, right, on this same video. We'll try to take it in the next video. Next video is on Indian society, I believe, right? Yes, paleo anthropology and primatology I have covered a little bit in the last session also, so you can watch it from there. Thank you, all the best.